It is rightly said, social media is about the people, not about your business. Provide for the people, and the people will provide for you. With this, a very good morning, everyone. I, Jha Chauhan, your host for today, welcomes you all on an experiential workshop on how to build engaged audience through social media tools. As you all know the reason we have joined in today, let me introduce you to the guest of the event, Dr. Prashant Parekh. Dr. Prashant Parekh is an accredited management faculty by All India Management Association, New Delhi. He is currently associated with Shanti Business School, Ahmedabad, as faculty in the area of marketing. Dr. Parekh is an author of 7 books. His currently released book is Brand Magic, The Art and Science of Creating Successful Brands, published by MICA, the School of Ideas. In his academic career of more than a decade, he has worked with institutions like Gujarat Law Society, Gujarat Technological University, Amity University, Oro University, and Center for Continuing Education, Nirma University. He has delivered guest lectures in institutions like Center for Entrepreneurship Development, Indian Institute of Management, Ahmedabad, Rajasthan Technical University, among others. Dr. Parekh has presented his research work in several national and international conferences organized by institutions like IIM Shillong, IIM Nagpur, Taylor's University, Malaysia, among others. Sir is a recipient of several awards. Some of them are as follows. Storymaker of Gujarat Award by Story Circle Adivsati, a startup incubated at IIM Bangalore. Dr. Sarvepalli Radhakrishna Award for Academic Excellence by International Council for Education, Research and Training, New Delhi. Dr. Parekh's corporate experience comes from the organizations like Dainik Bhaskar, ICICI Prudential, and Kammak Incorporation. Welcome, sir. Now, I would like to invite Professor Dipali Bhatnagar, Deputy Director, Amity Business School, Amity University, Rajasthan, for addressing the guest. Welcome, ma'am. Thank you so much, Jaya. That was really very briefly and crisply told by you for Dr. Prashant, and I have also been known sir for quite some time, and the kind of workshops that he takes are really amazing because they gives a hands-on experience upon what digital marketing is and how you can use it as a tool to brand the products and yourself as well, and how you can keep the customers engaging. That is something which is really challenging. So that is the art which you will be learning today through his session. And I'm sure it's going to be a very wonderful and valuable journey for all of you. So that was the reason that I requested most of you to come and be a part of it. And we are really honored, Professor Prashant, to have you here. So it's going to be very interesting. Even I'm very sure about it. So I will be throughout the session with you. So thank you so much for accepting our invitation. And my pleasure. My pleasure, without a further ado, I would like you to take over the dais and begin with your session. Yeah, thank you. Thank you, Dipali ma'am. Thank you, Ms. Jaya Chauhan, for such a wonderful introduction. So introduction was already pre-written, but the way you delivered the introduction, that made me so, you feel like, you know, कि पता नहीं मैं कितना valuable इंसान हूँ, but I am a student. I want to live my life as a student. We all learn every day from people, from the situations, from our experience. So, and I am really happy and privileged to be here at virtually. I am getting the chance to connect with Amity University, Jaipur, Rajasthan. And whenever it comes to Rajasthan, I feel so euphoric because I come from Rajasthan, basically. So my family migrated, my grandfather migrated from Jhunjhunu district in Rajasthan in 1981 to Ahmedabad, and after that we are here settled in Ahmedabad. So there are around 18 participants, including myself, but I cannot see anybody. And see, this is experiential workshop as mentioned by Dipali ma'am. So in order to gain experience, at least I must see few of you. So those who are in a position to on your cameras, at least they should on their cameras so that I can see you guys. Otherwise, I will feel like I am just shouting in a, you know,
Jungle. They are all in class setup. Acha, They are all in in class class setup. setup. So definitely, I request all of you to put on the cameras. And other reason is also that I want to capture this whole screen. So I'll take a screenshot the moment all of you are on with the camera. Exactly. Because as this is a world of social media, definitely need to post it as well. So I So, require your presence. the experience starts from here. Yeah. The moment you want to build your personal brand on social media, the prime condition is you must be visible. You must be participative. You must be vocal. You must have your voice. You must have your opinion, and you must be a participant in discussion. That is the fundamental rule of making your personal brand. So I don't know, ma'am, what is the configuration of this class? Are they PG students or UG students? They are all MBA students. Initially, MBA I was taking students. the senior batch only, the 4th semester. Great. But fortunately, most of them are placed, so we just have handful of them. And since it's a very interactive workshop, so I wanted my MBA second sem students also to join it. And they were Great. also equally eager to join. So that was the reason why they are all here. It's all MBA batch. MBA, Master of Business Administration, right. 4th sem, and few of them are 2nd sem, right? Yeah. I can see Harshit Lakhara, I can see Amit, Annie Saraswat, Kashish, I can see Kajal, Shreya, Naman, and few of them are connecting. So that's great. That's hope you guys can see me. Can you see me? Oh, that's fantastic. Now, let's begin the session with a short story. Because कहानी सुनना पसंद आप लोगों को, you guys love to listen story. Of course, आपको पसंद होना चाहिए because it's all about crafting stories. Life is about learning stories, crafting stories, and sharing the stories. So once there was a she camel, and the baby of she camel asked his mother that, Mama, why we have such a large hump on our back? So the she camel replied, Beta, we live in desert area. And in desert area, we don't get water to drink for 10 days, 15 days. So this hump helps us to store water so that we can survive. Okay, good question, good answer. Question number 2, because child is always curious, and you see child always ask questions, and that's how they learn. Question number 2, Mama, why we have such spongy legs? The mama replied, Beta, we live in desert area, and in desert area we have to walk on sand. So we don't, and when we walk on sand, it's a hot, warm sand. These spongy legs help us to walk on the sand effectively. Good question, good answer. Question number 3. Mama, why we have such large eyelashes that peacock doesn't have, that lion doesn't have? Why we have such large eyelashes? So the she camel replied, Beta, we live in desert area. And in desert area, there can be sometimes sandstorm. And these large eyelashes protect our eyes from sand. Very good. 3 questions, 3 answers. Then the child, the baby camel replied, Mama, we have a large hump for desert area. We have eyelashes for desert area. We have spongy legs for desert area. Then what we are doing in zoo? And story khatam. But what is the moral of the story? Anyone? See, when you are in a workshop, you cannot keep mum. So anyone can unmute and share with me what is the moral of this short fable. Anyone? Kajal would like to give a try. Kajal Verma? Yeah, Kajal. Yes, sir. So what's the moral of the story? Have you heard the story, Kajal? Yes, sir. Sir, am I audible? Yeah, you are audible. Perfectly fine.
Okay, so Kajal is unable to connect with us. Kashish Dhanjani. Kashish, have you heard the story which I just narrated? Yeah, unmute yourself, Kashish. So Kashish is also not speaking. Amit Kumawat. Yes, sir. Yeah, have you heard the story which I just narrated? Yes, sir. So what's the moral of the story? Sir, you told You are unknown and want to know. Kashish, you are not audible. Kashish, speak bit ऊंचा आवाज में. Must be curious about the things you want to learn, you want to explore. Okay, so you must be curious about the things you want to learn. So you must have a childlike curiosity. That is the first lesson Kashish has derived from the story. That's great, Kashish. So you are the first person on this 2nd March 2023 morning 10 a.m. who spoke first answer in the workshop. Okay, I'll send a gift for you to Dipali ma'am and you will get it very soon. That will be your reward for the first participation and initiative. Yeah, now let's go to next one. Aditi Chaturvedi. Aditi, other than what Kashish gained out of story, आपको क्या लग रहा है? She camel and baby camel. Yeah, Aditi. Aditi, unmute करो, mute मत करो. So please repeat yourself. So Aditi, other than what Kashish said, what is the moral of the story? What is the Moral of the story. What lesson you derived out of it? what is the कोई बात नहीं. Aditi तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है. Let's go to Sejal Modi. I can see Sejal Modi on the screen. Yeah, Sejal Modi. Yes, sir. So Sejal, have you heard the story which I just narrated? Sir, not completely. I have joined this. Acha, just not now. completely. Sejal joined late. So let's go to Mr. Ayush Pratap Singh. Yeah, Mr. Ayush. Ayush, you have something to say? actually, sir, the voice was not clear, so I haven't heard this story clearly. Acha, so you were not able to listen it. Let's go to Darshan Soneji. Oh my goodness. ये दीपाली मैम ने किसको सुबह सुबह बुला लिया, ये सबका नाम बोल बोल कर क्वेश्चंस पूछ रहा है. ये तो प्रॉब्लम हो गई. You know, until and unless you are not participating, how we will start to engage the audience? The moment you say we want to understand how to engage people Sir. in social media. Yeah, Amit, I think Sir. Amit has unmuted. Yeah, Amit. Sir, I was telling that answer, but in middle, Kashish was came. Sir, we have to know why the things we have, like the camel have, you told no, camel was thinking about legs. The thing which we have to know importance about that thing. Okay. So, Okay. So you must know your strengths, you must know your weaknesses, you must understand the opportunities out Yes, there sir. and beware of threats. So knowing Yes, sir. your strengths, knowing your skills is the lesson Amit Kumawat has derived out of the story which I narrated. Now, I will listen one last answer and then I'll start, I'll give you my perspective on this. Let's listen to Ayushi Mittal. Yes, Miss Mittal. Yes, Yeah, sir. yeah. Sir, please repeat the question. Amit says one must know his or her strengths and weaknesses. Kashish said, Kashish gave her own lesson which she derived out of the story. What is your understanding?
and what lesson you derive out of the story? Out of your Out of the story which I narrated. sir, I didn't listen that story because Oh of my my problem. goodness. So, see, मैं बहुत बेसिक बात करता हूं और बहुत बेसिक बात समझाने में मानता हूं. अगर मैं सुनूंगा नहीं तो कस्टमर्स मेरी बैंड बजा के चले जाएंगे. If I will not listen, मार्केट में क्या हो रहा है, can I run my business? Yes. Can I say something? Can I run my business if I don't listen to the customers? If I No, don't sir. listen what is happening in the market? Can my brand survive if I am not actually trying to listen the people, my target customer? समझ रहे हो आप इस चीज को? Yes, sir. Right. First thing, develop the habit of listening. चाहे कितना भी स्ट्रेस हो, सुनना बहुत जरूरी है. कितना भी ध्यान लगाना पड़े, just listen first. Observe, then only you will get content for social media, content for advertising, content for public relation, content for publicity, so on and so forth. Yes, Ayush Pratap Singh, you have raised your hand, Ayush. Yes, sir. Sir, actually, I wanted to say that when you started narrating the story, our classes were just winding up. So most of us haven't heard your story. That's why we are unable to respond. So if you please repeat your story, then I'm sure we all. We will. I will do it at last now. In the last 5 minutes, I will repeat it again. But those who have heard it, that's good. Those who have partially heard it, that is fair. Those who joined late, it's okay. We understand you guys are busy in your own assignments and prerogatives. Okay, fair enough. So let's jump to the session. Building engagement through social media. So Dipali ma'am, if I can get the hosting right so that I can share my screen. I want to share my PPT with the audience. I think you already have it, sir. Just a second. It shows. Yeah, thank you. So we are here. So guys, is it visible to you? Yes, sir. Okay, building engagement through social media. दोस्तों, बिफोर आई जंप ऑन द टॉपिक, कुछ बेसिक चीजें मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, तो मुझे आइडिया आ जाए हमें और कितना डिटेल में जाना है. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑन मार्केटिंग? Anyone can unmute or can write in the chat. अगर आप लोग बोल नहीं पा रहे, write your answers in the chat. What do you mean by marketing? According to you, because you guys are MBA semester 4 students, marketing के बारे में सुना पढ़ा है. What do you mean by marketing? Sir, I feel marketing is a tool which is used to communicate your message to your target customer. Okay. Fair enough, Mr. Ayush Pratap. Any other school of thought from anyone? Yes, sir. Yeah. Marketing, so basically, how do we sell ourselves? Okay, how we sell ourselves is marketing. Okay, fair enough. चलो इसको भी consider कर लेते हैं. Anyone else? Come on, class. Hello, sir. Darshan. This side. Yeah, Darshan. Sir, I want to define marketing as a medium through which we can, create our brand value and also promote our product or a company. Beautiful, beautiful. So let me give you 3 definitions. It is the process of marketing. Yeah, Kashish, you want to contribute? Yeah, it is the process of buying and selling, coming to the same platform Okay. where the other person is ready to buy and other person is willingly to purchase. Oh, fair enough. So I will give you 2 definitions of marketing because I am a professor. So हमें definition से प्यार होता है. But one definition is experience-oriented definition, which I have understood based on my experience, which I have heard from many corporate honchos.
The first definition of marketing is, and the most simple definition, marketing is a promise. How many of you agree? Marketing is a promise made to your stakeholders, your customers, the platform, the media, the government, and the public at large. So the moment I say that fair and glow lagao, gore ho jao, what they are doing in their advertisement, they are making a promise. So when any government says, any political party says, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, अगर हमको जिताओगे तो, they are making a promise. So the most simple definition of marketing is, it's a promise. And you guys are, I believe, pursuing your MBA in marketing specialization, if not all of you, most of you. And those who are of second semester, probably most of you will go for marketing specialization. Always keep in mind, marketing is a promise you are making to the society. And our role as marketing guys is to fulfill the promise. Second definition, marketing is about influencing the life of people. If I cannot influence people through my content, then people will not consider me. I have to come out with unique, innovative, creative content. So I must present myself, my brand, my business differently. Then only people will consider me. Am I making sense to you guys? I have given you two very simple meaning of marketing. Number one, you are making a promise. And number two, you are trying to influence the life of people. Influencing the life of people. That's great. Now let's come to the main topic after this. Social media. What is media? So I'm not asking you what is social media. I'm asking you what is media according to you. What do you understand by media, the term? Ronak. Yeah, Ronak. Sir, sorry, there is some problem with my camera, so I'm unable to on it. Not an issue, Ronak, but we can listen to you. That's great. So according to me, media means medium. A way of communicating can be known as a medium. A way of communication is a medium or a platform of communication or a channel of communication. Sir. Yeah, Amit. Sir, we can say it is a like mass communication. Mass communication. So yes, mass communication is about communicating with masses. इसीलिए हम लोग बोलते हैं ना टीवी मास कम्युनिकेशन मीडिया, हम लोग बोलते हैं रेडियो मास कम्युनिकेशन मीडिया, सोशल मीडिया both interpersonal and mass. So when you are chatting with your friend, that is not mass communication. When you are chatting in a small group on WhatsApp, that is not mass communication. But you prepare a video and you post it on some small group on WhatsApp, and then वो video viral हो जाए और groups में चला जाए, तो 5 लोगों से 500 लोगों तक पहुंच जाए, 500 से 5000 तक पहुंच जाए, 5000 से 5 लाख पहुंच जाए, तो क्या हुआ? It started with interpersonal communication and it reached to mass communication. It became mass. So media. Acha, Sejal Modi wants to give answer. She has raised her hand. Yes, Sejal. I think information. Information. My question is media. What is media? Simple term. Sir, it's a medium of expressing information. It's a medium of expressing information. And when it comes to our purpose, media जो हम लोग consume कर रहे हैं, we are surrounded by media every time. A book is a media. Radio is a media. TV is a media. Computer is a media. And smartphone is a media. Projector
in your classroom is a media. So media is basically a channel through which we reach our target audience. That is media. So I'm watching a TV show with the help of television. It's a media. IPL television पे मैं देख रहा हूँ, स्मार्टफोन में देख रहा हूँ. I am using media. I am reading a book. I am using a media. I am referring a media. But बहुत छोटा सा डिफरेंस आ जाता है when we talk about social media and traditional media. आजकल दो टर्म चलते हैं, traditional media or conventional media and social media. So your TV, radio, newspaper, traditional media, and Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, Snapchat, YouTube is the new media जो हम बात करते हैं. तो क्वेश्चन अराइज होता है, देखिए दोस्तों, पूरी दुनिया में 3 तरह के मीडिया होते हैं जिसमें सब कुछ आ जाता है. 3 तरह का मीडिया. एक होता है पेड मीडिया, एक होता है अर्नड मीडिया और एक होता है ओन्ड मीडिया. पेड, अर्नड एंड ओन्ड मीडिया. पेड मीडिया एक मार्केटर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूं. अगर मुझे पैसे देकर न्यूज़पेपर में ऐड करना पड़ा, दैट इज पेड मीडिया. मैंने मीडिया खरीदा है. मैं पैसे देकर टीवी पर ऐड चला रहा हूं मेरी ब्रांड का, दैट इज पेड मीडिया. दूसरा होता है ओन्ड मीडिया. यू ओन योर वेबसाइट. आपकी कंपनी का वेबसाइट इज योर ओन्ड मीडिया. आपने एक बार पैसे दिए, नाउ इट इज योर मीडिया. आपका सोशल मीडिया प्रोफाइल इज योर ओन्ड मीडिया. आपका यूट्यूब चैनल इज योर ओन्ड मीडिया. एंड थर्ड वन इज अर्नड मीडिया. मीडिया कमा सकते हो आप. मीडिया को कमाया भी जाता है. कैसे, कोई बता सकता है? भाई मैं पैसे देके ऐड कर रहा हूं तो पेड मीडिया. मैं खरीद रहा हूं, एक बार पैसे दे रहा हूं, फिर मैं ओन कर रहा हूं. मैं कमा कैसे सकता हूं मीडिया? यस If the third party is doing your promotion, or then it's called a third like earned media. Earned media. Oh, fantastic. If third party doing promotion without charging money. Otherwise टीवी पर मैं ऐड कर रहा हूं तो आई एम यूजिंग अ मीडिया बट मुझे पैसे देने पड़ रहे हैं. तो कोई इन्फ्लुएंसर अगर मेरी ब्रांड के बारे में वीडियो बना रहा है या मेरे लिए बहुत अच्छा रिव्यूज लिख रहे हैं मीडिया न्यूज़पेपर वाले, तो मैं उसको अगर पैसे नहीं दे रहा हूं तो अर्निंग है. यू हैव टू अर्न द मीडिया. तो से सपोज हम लोगों ने एक सेशन किया एमआईटी यूनिवर्सिटी जयपुर में. बहुत बड़े हॉल में हम लोग सोशल मीडिया पे सेशन करते हैं. दूसरे दिन दैनिक भास्कर जयपुर में न्यूज आती है कि एमआईटी यूनिवर्सिटी जयपुर हैज ऑर्गेनाइज्ड अ सेशन ऑन सोशल मीडिया बाय सो एंड सो गाय. और इसके लिए एमआईटी यूनिवर्सिटी जयपुर ने कोई पैसा नहीं दिया, वो अपने आप उन्होंने कंसीडर किया. दैट इज अर्नड मीडिया. सो इंटरव्यू गिवन बाय रतन टाटा, अर्नड मीडिया. बट एडवर्टीजमेंट गिवन बाय टाटा मोटर्स, टियागो, हैरियर, that is paid media. Is it clear? क्या मेरी बातें समझ में आ रही है आपको? Am I making sense to you guys? Is it clear? What actually, how you categorize the media? And your social media is your own media. आपकी कंपनी का फेसबुक पेज आपका है, you own it. Your YouTube channel, you own it. And I have mentioned here 2 meanings of social media. Social media are works of user-created video, audio, text, or multimedia that you put and you share in a social environment, such as blog, wiki, video hosting, etc. And the another meaning is social media defines the various activities that integrate society. And people, what they do, they construct words and pictures. इसीलिए social media को कहा जाता है for the people, by the people and of the people. लोगों ने बनाया उसका कंटेंट, लोग आपस में बांटते हैं, लोग यूज करते हैं. That's why we call it social media. तो क्या आता है सोशल मीडिया में?
What are the elements of social media? Anyone? What comes in social media? जब हम लोग social media word सुन रहे हैं, तो what comes to your mind? Anyone? Sir, a large customer reach. Yes, Ayush. Sir, I think when we talk about social media, the word that comes to my mind is a larger customer reach. You're not audible to me, Ayush. So I'm saying when we talk about social media, I feel the word that comes to my mind is a larger customer reach. A larger customer reach. But what मैं पहुंचता कैसे हूँ ये कस्टमर तक? मैं क्या करता हूँ ऐसा सोशल मीडिया पर? वो कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया के? Which are the platforms of social media? Yes, Ronak. Yes, sir. According to Instagram is now famous kind of social media along with Snapchat. Snapchat, one tool. Yes, and particularly reels and small videos that I am reminded of, including small ads whenever I think of social media. Great. Okay, reels, YouTube पर reels, Instagram पर reels, Facebook, social media. We consider, so generally जो नाम हम बोलते हैं ना, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, that is one component of social media, the entire umbrella of social media. ये सब social networking में आ जाता है. So let me take you to the growth of social media. From this graph, you can see Facebook started in 2004, Twitter started in 2008, Google Plus started in somewhere around 2011, Pinterest started in 2012, and Instagram started in 2010. और इन सब की अपनी अपनी खास बात है. And they all have their pros and cons. आपका प्रोडक्ट कौन से प्लेटफॉर्म पे फिट होता है, वहां पर उसे पिच करो. Have a primary platform, then have a secondary platform. ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके प्रोडक्ट के लिए सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म काम के. The biggest mistake brands make is that कि सब पे पोस्ट कर दो, सब पे पोस्ट कर दो. But beware, posting is not social media marketing. अगर आपको बहुत अच्छा क्रिएटिव बनाना आता है और आप पोस्ट कर रहे हो and you claim that I am a social media expert, you are living under a notion. So beware of that. So this chart is just for your understanding that these social networking sites, when they came into existence. This is an overview of social media use in India, हमारी country में. देखो कैसा use है social media का. So number of social media users in India 2022, 467 million. Yani around 47 crore people use social media. Yes, Siddhant Tomar, you have raised your hand. Siddhant, you have raised your hand. Any question? Okay, so शायद गलती से हुआ है. 47 crore users. So year on year, change in social media users. हर साल 1,90,00,000 लोग सोशल मीडिया यूज करना शुरू करते हैं इंडिया के अंदर. याद रखना ये चीज. कल को आप कोई इंटरव्यू फेस करोगे और आप सोशल मीडिया पे बात करोगे, whenever you say statistics in group discussion and personal interview, it creates an impression. और इंटरव्यूअर को, कंपनी को ऐसा लगता है कि ये लड़का या ये कैंडिडेट, ये लड़की सीरियस है इस प्रोफाइल के लिए, इस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए. सो एवरेज डेली टाइम स्पेंड यूजिंग सोशल मीडिया 2 hours 36 minutes स्पेंड करते हैं लोग सोशल मीडिया के ऊपर. ईयर ऑन ईयर चेंज इन टाइम स्पेंड यूजिंग सोशल मीडिया, हर साल 11 मिनट बढ़ जाते हैं. सोशल मीडिया यूजर्स वर्सेस टोटल पॉपुलेशन. So total population का 33.4% population is using social media, some or other platform. Social media users versus population age 13 plus. तो 13 साल से ऊपर की जो population है,
उसमें से 42.6% लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं इंडिया में. आई एम नॉट गिविंग यू द डेटा ऑफ वर्ल्ड. यू कैन सी ऑन द स्क्रीन द डेटा इज ऑफ इंडिया. सोशल मीडिया यूजर्स वर्सेस टोटल इंटरनेट यूजर्स. तो अगर 100 लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं इंडिया में, उसमें से 70% कोई ना कोई सोशल मीडिया का यूज कर ही रहे हैं प्लेटफॉर्म का. फीमेल सोशल मीडिया यूजर्स वर्सेस टोटल सोशल मीडिया यूजर्स 26%. टोटल सोशल मीडिया यूजर्स जो भी हैं, ये जो पहला फिगर मैंने बताया 467 मिलियन, उसमें से फीमेल यूजर्स कितनी है? 26%. That's why you see these new age brands, Mama Earth, Nykaa, Sugar Cosmetics, इनका सोशल मीडिया कैंपेन कितना जोरदार चलता है, because they know their target customer is there. So this is just to give you a glimpse of the social media landscape. Now, क्या होता है? What is the purpose of using social media? अगर आप एक brand हो, तो why you will use social media? This is my question to you guys. If you are a brand, if you are a business, why you are using social media? Why these businesses are using social media? Anyone? Again, we have to directly engage with customers. Pardon? Harshit, I believe. Harshit Lakhara. Good morning. Yes, sir. That to directly engage with customers and interact with Yes. them We directly. want to engage with our customers. And marketing students, beware. Never use the word customers. Sir? Always use the word target audience. Yeah, Sijal. Sir, to reach the large target audience. क्या हो रहा है? Sir, to reach the large target audience. Okay, to reach the large target audience. तो पता है अल्टीमेटली पर्पस क्या है? ये जो हमारा पर्पस होता है, ये क्या सीजल मोदी wants to say something? Yes, to reach the large target To audience. reach the large target audience. So there is a term called word of mouth. We want to generate a positive word of mouth. Right? We want to generate a positive word of mouth among our target audience. और ये फर्क है. एक word of mouth होता था हमारे जमाने में, जब सोशल मीडिया नहीं था. तब लोग हमसे पूछते थे कि तूने नाइकी के जूते खरीदे, कैसे हैं? तो आप अपना ओपिनियन उनको देते थे. रिश्तेदारों से, दोस्तों में आपस में बात होती थी. आज का जमाना है सोशल मीडिया वर्ड ऑफ माउथ. आप एक पोस्ट डालो कि आई एम कंसीडरिंग टू बाय सो एंड सो कार फेसबुक पे, कैन समबडी गिव मी रिव्यूज ऑफ दैट कार, एंड यू सी द नंबर ऑफ पीपल दोज हु विल गिव यू द रिव्यूज. और ये ब्रांड्स के लिए बहुत खतरनाक हो गया है मामला. पहले क्या होता था? बहुत छोटे स्केल पे होता था वर्ड ऑफ माउथ. मतलब मैं कितने लोगों से दिन में मिलूंगा, और जरूरी नहीं है कि मेरी बात होगी कोई पर्टिकुलर ब्रांड के बारे में. अभी तो जब आपका मन हो जाए, यू कैन पोस्ट एंड पीपल विल शेयर देयर रिव्यूज विद यू. इसीलिए लिखा है, देखो, ट्रेडिशनल वर्ड ऑफ माउथ वाज लोकल, बट सोशल मीडिया वर्ड ऑफ माउथ इज ग्लोबल. एनी पर्सन फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड जिसने वो प्रोडक्ट यूज किया है विल गिव यू द रिव्यू, अगर आप उससे कनेक्टेड हो गए. ट्रेडिशनल वर्ड ऑफ माउथ वाज अबाउट वॉइस. हम बताते थे लोगों को ये ब्रांड कैसा है, ये प्रोडक्ट कैसा है. आजकल क्या है? वीडियो पोस्ट करते हैं लोग, टेक्स्ट पोस्ट करते हैं. तो वी चैट, वी राइट एंड वी शेयर आवर रिव्यूज. ट्रेडिशनल वर्ड ऑफ माउथ, द कम्युनिटी वाज स्मॉल. मेरे 10, 15, 20, 25 दोस्त हैं बस. बट सोशल मीडिया वर्ड ऑफ माउथ, द कम्युनिटी इज वायरल. Anywhere from anywhere in the world can connect to you and can ask for your reviews. In traditional word of mouth, it was a trickle down effect. हम लोगों को बताते थे, फिर वो किसी को बताएगा. बहुत स्लो प्रोसेस था. सोशल मीडिया वर्ड ऑफ माउथ, circular. It's a network effect. It spreads very fast. So in traditional word of mouth, the feedback was episodical.
but in social media the feedback is continuous. इसीलिए ब्रांड्स कहीं ना कहीं डरती भी है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताऊं, 2 दिन पहले आई वेंट टू HDFC अर्गोज ऑफिस इन अहमदाबाद। नाम सुना होगा आप लोगों ने, HDFC अर्गो। इट्स अ हेल्थ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस कंपनी। तो वहां पर कोई एक भाई साहब थे, उनका झगड़ा चल रहा था उस वहां के मैनेजर के साथ। लास्ट में उसने एक ही लाइन बोली कि आप लोग अगर मेरा काम नहीं करके दोगे तो आई विल एस्केलेट द इश्यू ऑन सोशल मीडिया। उसने वहां फोटो वगैरह क्लिक कर लिए और बोला आई विल राइट ऑन सोशल मीडिया। HDFC अर्गो वाले उस कस्टमर को खुश करने के काम में लग गए। दिस इज द डिफरेंस। टुडे इफ यू हैव एनी ग्रीवांस, द मोमेंट यू आर ऑन सोशल मीडिया, आपने अगर कुछ पोस्ट कर दिया, ब्रांड्स दे विल कैच यू एंड दे विल ट्राई टू पेसिफाई यू, आपको शांत करने की कोशिश करेंगी। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि ये होता कैसे है, आप कैसे कर सकते हो। Okay, is it clear? Let's go to next slide. So these are the types of social media: social news site, social networking, social bookmarking, social sharing, social events, blogs, microblogging, wikis, forums and message boards. तो बहुत सारे 80% लोग इस देश में ये समझते हैं कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, यूट्यूब हो गया सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का हिस्सा है सोशल नेटवर्किंग साइट्स, सोशल न्यूज साइट लाइक रेडिट, न्यूज़वाइन। आप इन पर जाकर अपना आर्टिकल पोस्ट कर सकते हो, वीडियो पोस्ट कर सकते हो, आपकी ब्रांड के बारे में आप लिख सकते हो, लोग उसको वोट देंगे, वोट मिलेगा तो वो फ्रंट पेज पर दिखाई देगा और आपकी ब्रांड की विजिबिलिटी बढ़ेगी। सोशल बुकमार्किंग, डिलीशियस, मेंगालियो, ऐसी वेबसाइट्स पे जाके आप टाइप्स ऑफ सोशल मीडिया, सोशल शेयरिंग, मीटअप, Yahoo upcoming, wherein actually you can announce the upcoming events and you can create a buzz. Blogs, you all know, Medium, Blogspot. मीडियम पर अगर आप ब्लॉग लिख रहे हो, लास्ट में उसका लिंक दे दो, आपकी वेबसाइट का लिंक होना चाहिए, सो दैट यू कैन ड्राइव द ट्रैफिक टुवर्ड्स द वेबसाइट। Microblogging, 140 characters, Twitter, we all know, wikis, Wikipedia, and forums and message boards. This is the entire umbrella of social media. So if somebody asks you what comes under social media, these many things comes under social media. It is not only about Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn. No, social media is much more that. And in traditional marketing, we used to talk about return on investment. In social media, the objective should be measuring the buzz, monitoring the buzz. क्या चल रहा है, लोगों का सेंटिमेंट क्या है, कौन सी चीज को लोग ज्यादा सर्च कर रहे हैं, and if you can craft your content around it, you can get a good features, काफी माइलेज मिल सकता है। और ये जो नाम मैंने लिखे हैं ना, इन टूल्स का यूज करके आप पता लगा सकते हो कि लोग अभी क्या ज्यादा सर्च कर रहे हैं। तो अगर कोई कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है, बी स्कूल, MBA, लोग क्या सर्च कर रहे हैं, मैनेजमेंट एजुकेशन में क्या लोग सर्च कर रहे हैं, डेटा एनालिटिक्स सर्च कर रहे हैं, सोशल मीडिया सर्च कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग सर्च कर रहे हैं। Accordingly, the university or the institute can craft the content. Google Alerts is a free tool. You can go to Google Alerts and can search the sentiment of people कि क्या चल रहा है, अभी किस टॉपिक पे ज्यादा बातें हो रही है। Radian 6, Techrigi, Buzzmetrics, TrekUR, they all are paid tools. So initially they may give you, for some time, they may give you a trial period, and then you have to pay some fees, and you can get access to the entire report of sentiment analysis, wherein you will come to know लोग किसी टॉपिक पे किस टोन में बात कर रहे हैं, पॉजिटिवली बात कर रहे हैं, नेगेटिवली बात कर रहे हैं, ज्यादा क्यूरियस किस टॉपिक को लेकर हैं लोग, ऐसा कौन सी चीज है जिसकी जानकारी लोगों को ज्यादा चाहिए। सो अकॉर्डिंगली यू कैन राइट ब्लॉग, यू कैन राइट योर
articles, you can create a video and post with the right keywords so that it can create buzz and you get maximum likes, tweets, views, etc. And ये सारे tools आप use कर सकते हो. That's why I have given the title Return on Conversation. So social media is about conversation and return on conversation. The next is, if say suppose and somebody writes negative about your brand, what you will do? My question is, if say suppose you are running a restaurant और मैंने ट्विटर पे लिख दिया, टुडे आई विजिटेड सो एंड सो रेस्टोरेंट एंड आई फाउंड द फूड पैथेटिक, और ट्विटर पे इसको मैंने लिख दिया. आप भी ट्विटर पे एक्टिव हो, आपकी सोशल मीडिया टीम को पता चलता है कि एक कस्टमर ने ऐसा कुछ लिखा है, क्या करोगे आप उस सिचुएशन में? एनीबडी? या रौनक? So according to me, what we will do is, first of all, we'll address to the customer and ask him what was the actual problem. We'll try to make it public and show that we are actually trying to solve the problem, so that we can even use the negative publicity as a positive. Exactly. So the first rule is acknowledge. So as a customer, if I am writing that so and so restaurant I visited and the food was pathetic, the fundamental rule is your team must be active और वो monitor कर रही है कि आपके बारे में क्या चर्चा हो रही है. Engage in conversation with the person who is complaining. कि we are very sorry to know that you didn't like the taste of the food. Can you write your grievance on this given email ID? Our team will get back to you. So उसको सबसे पहले तो अपने पर्सनल कम्युनिकेशन चैनल पे ले आओ. सोशल मीडिया पे लंबा डिस्कशन मत करो. सोशल मीडिया पे तो जो चीजें आप लिख रहे हो वो इतनी लिखो जिससे पता चले कि यू आर अ कैरिंग बिजनेस, यू आर अ कैरिंग ब्रांड, बिकॉज यू मस्ट अंडरस्टैंड द पावर ऑफ कम्युनिटी. आपने अगर एक चीज गलत लिख दी, आपका कोई शब्द गलत लिखा गया, तो फिर और लोग उसके सपोर्ट में आ जाएंगे और वो मास गैदर कर लेगा और आपकी ब्रांड इमेज को उससे झटका लग सकता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्नॉलेज, बी हम्बल एंड सॉल्व द प्रॉब्लम. और फिर प्रॉब्लम जब सॉल्व हो जाए तो आपकी टीम को बोलो और उसको भी बोलो जिसने कंप्लेन की थी कि सर इफ नाउ यू कैन राइट दैट योर प्रॉब्लम इज रिजॉल्व्ड. और आपकी टीम पे लिखेगी, सर ऑन दिस डेट यू हैड दिस प्रॉब्लम, होप वी एड्रेस्ड योर प्रॉब्लम एंड नाउ यू आर हैप्पी. आप इससे क्या कर रहे हो? यू आर क्रिएटिंग अ पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ, यू आर क्रिएटिंग अ पॉजिटिव इमेज ऑफ योर बिजनेस एंड ऑफ योर ब्रांड, एंड यू आर क्रिएटिंग फैंस अल्टीमेटली. सोशल मीडिया का पर्पस कस्टमर बनाना नहीं है दोस्तों, वो डिजिटल मार्केटिंग का पर्पस है, वो पूरा अलग कंसेप्ट है. सोशल मीडिया का पर्पस है फैंस एंड एवेंजलिस्ट क्रिएट करना, लोग आपके सपोर्ट में खड़े हो जाए. जैसे होता है ना, हम लोग समाज में रहते हैं तो हम लोग क्यों दोस्त बनाते हैं, रिश्तेदार हमारे होते हैं, हम लोग आस पड़ोस में अच्छे रिलेशन क्यों रखते हैं कि भाई कल को कोई प्रॉब्लम आए तो ये लोग सपोर्ट में खड़े रहेंगे. सीधा हिसाब है. वैसे ही सोशल मीडिया पर यू नीड टू क्रिएट फैंस, यू नीड टू क्रिएट फॉलोवर्स with the help of your content, with the help of your grievance redressal mechanism, with the help of your video, with the help of your traditional advertising and media, with the help of your other activities. Is it clear, guys? Am I making sense? Can somebody confirm कि ये समझ पा रहे हैं आप लोग? Yes, sir. That's great. So these are the 5 stages. You need to think of social media as social conversations. Realizing the benefit of monitoring. Keep on monitoring कि आपके बारे में क्या चर्चा हो रही है, आपके बिजनेस के बारे में क्या चर्चा हो रही है, and how you can monitor with the help of these tools. Google Alerts, Radian6, TechRiggy, Buzzmetrics, TrekUR. Engage in conversation. Understand the power community members hold. Being humble and create fans. तो सोशल मीडिया पे जितने भी लोग हैं उनको 6 कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हो. पहली कैटेगरी है क्रिएटर्स, सेकंड कैटेगरी इज क्रिटिक्स, कैटेगरी इज कलेक्टर्स, फोर्थ कैटेगरी इज जॉइनर्स, फिफ्थ कैटेगरी इज स्पेक्टेटर्स,
And sixth category is inactives. Creators are those who create content. अपना वीडियो बनाते हैं, ब्लॉग लिखते हैं, विकीपीडिया बनाते हैं. They are creators. Critics are those people who actually write comments on the content. कई लोग, आप कई बार होता होगा, आपने कुछ पोस्ट किया तो उस पर किसी ने कमेंट किया, हो सकता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कमेंट होता है. क्रिटिक का मतलब नेगेटिव नहीं है, क्रिटिक कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो. सो जैसे कोई मूवी के क्रिटिक होते हैं ना, 5 में से 3 स्टार, 5 में से 4 स्टार, वैसे ही आपके वीडियो के भी क्रिटिक होते हैं, आपके फेसबुक पोस्ट के भी क्रिटिक हो सकते हैं, आपके इंस्टाग्राम रील के भी क्रिटिक होते हैं. They may write good about you, they may write not so good about you. Now it is your attitude, how you solve this. आप अपने शब्दों से किस तरह खेलते हो, वो इंपॉर्टेंट है. क्रिटिक्स को इस तरह हैंडल करना पड़ता है. तो क्रिटिक्स क्रिएटर्स ना भी हों, वो अपना कोई कंटेंट पोस्ट नहीं करते कभी भी, वो सिर्फ लोगों के कंटेंट पे बात करते हैं. दे आर क्रिटिक्स. जैसे नहीं फिल्म क्रिटिक्स होते हैं, दे हार्डली एनी फिल्म क्रिटिक हैज प्रोड्यूस्ड और मेड अ मूवी, बट दे आर गिविंग अ लॉट ऑफ ज्ञान टू द ऑडियंस कि मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए. देन देर आर कलेक्टर्स. वो सिर्फ कलेक्ट करने का काम करते हैं. आप सोशल मीडिया पर वो हैं, वो आइडियाज कलेक्ट करने के लिए आए. क्या नया चल रहा है, क्या नया वीडियो बना है, कैसी नई पोस्ट आई है, नया जो फेस्टिवल सीजन चल रहा है तो किस तरह के पोस्ट लोग कर रहे हैं, ये सारी चीजों के लिए दे आर मेरे कलेक्टर्स. इसीलिए बस वो सोशल मीडिया पे अकाउंट बनाते हैं टू व्यू. देन देर आर जॉइनर्स, जो अभी प्रोसेस में है, सोशल मीडिया पर आए ही हैं, जस्ट दे हैव जस्ट जॉइंड, दे आर एक्सप्लोरिंग. हो सकता है वो फ्यूचर में कलेक्टर बन जाए, क्रिटिक बने या क्रिएटर बने. स्पेक्टेटर्स, कुछ नहीं करना है, सोशल मीडिया अकाउंट बना दिया और देखो क्या हो रहा है. एंड लास्ट इज इनएक्टिव्स, जो अब अकाउंट है 2 साल से ऑनलाइन नहीं आए, 6 महीने से अपना फेसबुक पेज ओपन नहीं किया, दे आर काइंड ऑफ इनएक्टिव्स. जनरली आफ्टर द एज ऑफ 50 पीपल गेट इनएक्टिव. Most of the people get inactive on social media. Yeah, Ayushi. Ayushi, any question? Ayushi Mittal, any question from your side? Okay, I think there is no question. Audience on social media, how to handle negative. आपको पता लगाना होगा कि कांस्टेंट कंप्लेनर कौन है एंड अपसेट कस्टमर कौन है. कांस्टेंट कंप्लेनर वो लोग होते हैं जिनके साथ दुनिया ने ही बुरा किया है, बस वो ऐसे जीते हैं. कोई भी हो वो नेगेटिव ही बोलेंगे. ऐसे लोगों को पता लगाकर उन्हें ज्यादा एंगेज करने की जरूरत नहीं है, उनसे ज्यादा एपोलॉजी करने की जरूरत नहीं है. अपसेट कस्टमर वो होते हैं जो आपके लिए पॉजिटिव थे, बट कोई इंसिडेंट ऐसा हुआ कि उन्हें नेगेटिव लिखना पड़ा. तब आपकी ड्यूटी बनती है, इट इज द ड्यूटी ऑफ योर ब्रांड दैट यू रीच such customers and pacify them, solve their problems, resolve their issues. So how you spot constant complainer? आप जब उनका प्रोफाइल चेक करोगे, आप देखोगे उनके पोस्ट, उनके लाइक्स, ट्वीट्स, रीट्वीट्स वगैरह, दे आर ऑलवेज नेगेटिव. कोई भी हो, दे आर नेगेटिव. एंड अपसेट कस्टमर्स आर नॉट नेगेटिव. Some genuine incident has made them negative. Some incident has made them genuinely upset. So you need to categorize between these two and don't waste your energy behind the complainers. Go with the upset customers, engage the upset customers and resolve their issues. और ये है सोशल मीडिया मार्केटिंग का प्रोसेस. आप लोगों की स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं. सबसे पहले जब भी हम सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले सिलेक्ट द प्लेटफॉर्म. 2 तरह के प्लेटफॉर्म होते हैं, एक होता है प्रिंसिपल प्लेटफॉर्म, एक होता है सब्सिडियरी प्लेटफॉर्म. तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स 2 तरह के होते हैं, एक होता है बताने वाला प्लेटफॉर्म, एक होता है दिखाने वाला प्लेटफॉर्म. अगर मुझे कुछ एक्सप्लेन करना है, डिटेल में एक्सप्लेन करना है अलग अलग इंफोग्राफिक्स के साथ, तो मैं कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करूंगा दोस्तों? कोई मुझे बता सकता है? यस काजल, या काजल.
maybe YouTube. या बिकॉज वो प्लेटफॉर्म जहां मेरा प्रोडक्ट या मेरा सर्विस ऐसा है कि मुझे एक्सप्लेन करना है लोगों को, तो मैं यूट्यूब पर जाऊंगा। लेकिन मेरा प्रोडक्ट ऐसा है कि बस मुझे उसके बहुत सुंदर सुंदर पिक्चर्स दिखाने हैं लोगों को, तो मैं कौन सा प्लेटफॉर्म पे जाऊंगा? इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, फेसबुक चलेगा। अगर मान लो मेरा जो बिजनेस है वो है B2B, मुझे बिजनेस कस्टमर्स को टारगेट करना है, कंपनी एग्जीक्यूटिव्स को, तो मैं कहां जाऊंगा? लिंक्डइन, ऑफ कोर्स आई गो टू लिंक्डइन। तो ऑलवेज, मान लीजिए आप लोग तो अभी स्टूडेंट हैं, अभी आप लोगों को पता है कौन सा प्लेटफॉर्म ज्यादा यूज करना चाहिए? लिंक्डइन यूज करना चाहिए। आपका ये बहुत सही टाइम है टू बिल्ड योर नेटवर्क। अब लिंक्डइन पे भी आपको मतलब ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी का HR मिला, उसने उसको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजा, उसने कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया और आपने उसको मैसेज डाल दिया, सर आई एम लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी, काइंडली सजेस्ट। नो, इट लुक्स वेरी चीप। आप एक मैनेजमेंट स्टूडेंट हो, बिहेव लाइक अ मैनेजमेंट कम्युनिकेशन प्रोफेशनल। प्रोफाइल बनाओ, अच्छे अच्छे आर्टिकल्स लिखो, करंट टॉपिक्स पे लिखो। किसी कंपनी के एग्जीक्यूटिव ने कुछ पोस्ट किया है तो उसके नीचे कमेंट लिखो, ऐसा कमेंट जो उसको अच्छा लगे, क्योंकि आपको काम है इसीलिए उसको पसंद आए। और लोग कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे चर्चा शुरू करो, सो पीपल विल कनेक्ट विद यू, लोग आपको नोटिस करना शुरू करेंगे। कभी कोई टॉपिक पे वीडियो शूट करके वो वीडियो आप अपने फेसबुक पे रखो, लिंक्डइन पे रखो, छोटा सा वीडियो 2-3 मिनट का। तो से सपोज जोशीमठ, रशिया यूक्रेन वॉर, बजट 2023, तो आप छोटे छोटे वीडियोस पोस्ट कर सकते हैं। इससे क्या हो रहा है? पीपल कंसीडर योर पर्सनैलिटी बेस्ड ऑन योर कंटेंट विच यू हैव पोस्टेड। तो आपको ये बहुत क्लियरली समझना होगा कि आप चाहते हो कि लोग अब आपको सीरियसली लें एंड आप उस हिसाब का कंटेंट पोस्ट करना शुरू करिए। तो फर्स्ट, बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल ऑन लिंक्डइन, connect with people, post some intelligent content on LinkedIn, and then you will see once you are engaging people in conversation, then probably people will approach you, या आप किसी को approach करोगे, after a point of time things will be in your favor. So select one principal platform and other subsidiary platform. Then comes content series. कंटेंट का सीरीज होना चाहिए। तो अगर मैं मान लो सोशल मीडिया पर वीडियोस बना रहा हूं और शॉर्ट वीडियोस, तो मैं फेसबुक मार्केटिंग पे एक वीडियो बनाऊंगा, आई विल क्रिएट बस, फिर लोगों को लगेगा कि आगे क्या बनाएगा, तो मैं इंस्टाग्राम मार्केटिंग का दूसरा वीडियो बनाऊंगा, फिर मैं तीसरा लिंक्डइन मार्केटिंग का वीडियो बनाऊंगा, फिर मैं ब्लॉग मार्केटिंग पर वीडियो बनाऊंगा, फिर मैं ट्विटर मार्केटिंग के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। सो आई हैव क्रिएटेड अ सीरीज। इससे मेरी एक पोजिशनिंग हो रही है लोगों के दिमाग में कि प्रशांत पारी इन चीजों के लिए जाना चाहता है। तो आप जब तक अपनी पोजिशनिंग क्लियर नहीं करोगे लोगों के दिमाग में, पीपल विल नॉट टेक यू सीरियसली। एक स्टैंड क्लियर होना चाहिए। सो क्रिएट अ सीरीज। जैसे नहीं हम लोग वेब सीरीज देखते हैं तो उसका फर्स्ट एपिसोड हमें पसंद आएगा तो सेकंड एपिसोड हमें काम का है ना। तो लोगों को पसंद आया फर्स्ट एपिसोड, तो मेरे पास सेकंड एपिसोड रेडी होना चाहिए, थर्ड एपिसोड रेडी होना चाहिए। फर्स्ट सीजन लोगों को पसंद आया तो मैं सेकंड सीजन बनाने में लग गया। दिस इज हाउ इट वर्क्स। ऑप्टिमाइज योर प्रोफाइल, प्राइमरी कीवर्ड एंड सेकेंडरी कीवर्ड। तो अगर मैं कोई स्किन केयर ब्रांड हूं दिल्ली में, तो मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर दिल्ली स्किन केयर ये मुझे कहीं ना कहीं मेंशन करना होगा। हो सकता है मैं मेरे इंस्टाग्राम में मेरा नाम लिख रहा हूं प्रशांत पारी स्किन केयर, देन ओनली कीवर्ड सर्च में और मेरा रैंकिंग आ पाएगा, और जब लोग सर्च करेंगे तब वो मुझ तक पहुंच पाएंगे। अगर डिजिटल मार्केटिंग में लिख रहा हूं तो प्रशांत डिजिटल, लोग लिखते हैं ना ऐसा नाम, प्रशांत डिजिटल, निशांत डिजिटल, जया डिजिटल, वाई अपने नाम में ही वो डिजिटल ऐड कर रहे हैं ताकि डिजिटल मार्केटिंग सर्च करने वाले लोग उन तक पहुंच जाएं। सेकेंडरी कीवर्ड आपका लोकेशन हो सकता है, अदर सर्विसेज, प्रोमिनेंट सर्विसेज विच यू गिव वो हो सकता है,
मेक कंटेंट। तो देखो फर्स्ट स्टेप क्या था, सिलेक्ट प्लेटफॉर्म। सेकंड स्टेप है दोस्तों सीरीज बनाओ कंटेंट की। अगर आप ब्लॉग्स लिखना शुरू कर रहे हो तो मान लो आप इंडियन माइथोलॉजी पे ब्लॉग लिख रहे हो तो 3-4 ब्लॉग आप लिख लो पहले, फिर उनको एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में पोस्ट करते रहो, ये बहुत जरूरी है। मेक कंटेंट चौथा स्टेज है। दो तरह के कंटेंट होते हैं दोस्तों, कोर कंटेंट वर्सेस एंगेजिंग कंटेंट। कोर कंटेंट तो भाई मेरा ये प्रोडक्ट है स्मार्टफोन, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं वीडियो में, ये तो कोर कंटेंट हुआ। लेकिन मैं उसको एंगेजिंग कैसे बनाऊंगा, मेरा क्रिएटिव जो वर्ड्स मैंने यूज किए हैं, किस स्टाइल में मैं बोल रहा हूं, बैकग्राउंड बैकड्रॉप कैसा है। तो एक टूल है ब्रांड स्पॉट 365, यू गाइस कैन गो थ्रू दिस टूल। ये आपको कंटेंट बनाने में बहुत काम आ सकता है। आपको अलग अलग टेम्पलेट्स ये देगा, आप वो टेम्पलेट यूज करके यू कैन क्रिएट एंगेजिंग कंटेंट। तो कभी ट्राई करना ब्रांड स्पॉट 365, जो लोग मुझे सुन रहे हैं इसको नोट कर लेना ब्रांड स्पॉट 365 को, इट विल हेल्प यू अ लॉट। तो फिफ्थ स्टेज पोस्टिंग कंटेंट, टाइमिंग, पैटर्न एंड ऑटोमेशन। तीन चीजें होती है दोस्तों कंटेंट पोस्ट करने में, टाइम, पैटर्न और ऑटोमेशन। टाइमिंग, एकदम राइट टाइम होना चाहिए कंटेंट पोस्ट करने का। तो अगर मान लो अभी जो टाइम चल रहा है वो ऐसा टाइम है कि स्टूडेंट्स आर लुकिंग फॉर एडमिशंस, जो लोगों का बीबीए खत्म होने वाला है वो एमबीए के लिए देख रहे हैं अच्छा इंस्टीट्यूट अपने लिए, तो आप देखोगे कि अभी बी स्कूल्स का और यूनिवर्सिटीज का मैक्सिमम एडवर्टीजमेंट चलता है ऑन सोशल मीडिया, बिकॉज दिस इज द टाइम when students are looking for higher education. पैटर्न एंड ऑटोमेशन, कंटेंट का पैटर्न कैसा है। सोशल मीडिया में भी इंस्टा पोस्ट के लिए अलग तरह का शेप एंड साइज, फेसबुक पोस्ट के लिए अलग तरह का शेप एंड साइज, लिंक्डइन पोस्ट अलग तरह का शेप एंड साइज होता है आपके क्रिएटिव का। और कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक क्रिएटर स्टूडियो, ये फ्री है, क्रिएटर स्टूडियो गूगल फेसबुक का, एंड बफर ये पेड है। तो यू कैन गो टू क्रिएटर स्टूडियो एंड बफर and you can create customized content for all the social networking platforms, ट्विटर के लिए, लिंक्डइन के लिए, फेसबुक के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, आप इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड लास्ट वन इज प्रमोटिंग द कंटेंट। तो फेसबुक एड मैनेजर, फेसबुक के करीब करीब इस दुनिया में आप मान लीजिए 300 करोड़ यूजर्स हैं दोस्तों फेसबुक का, एंड द स्ट्रेंथ ऑफ फेसबुक इज डेटा। उसके पास हमारा पूरा डेटा है। फेसबुक अपने एनालिटिक्स की मदद से ये भी बता सकता है कि आप अभी क्या सोच रहे हो, अभी आप कौन सा प्रोडक्ट या सर्विस खरीदने की सोच रहे हो, ये भी आपको फेसबुक बता सकता है, बिकॉज उसके पास डेटा है, और जिसके पास डेटा है वो सबका दाता है। सो कीप इन माइंड। और लास्ट में डोंट फॉरगेट टू पुट कॉल टू एक्शन बटन इफ यू आर सेलिंग समथिंग। तो कई वीडियोस में आप देखते होंगे ना, लास्ट में वो बोलते हैं सब्सक्राइब कीजिए, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को, आप ये प्रोडक्ट आप खरीद सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, ये बुक आप डाउनलोड कर सकते हो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। सो दिस इज व्हाट कॉल टू एक्शन। भाई आपने कंटेंट अच्छा बना लिया, प्रेजेंट अच्छी तरह कर दिया, अब कस्टमर को आगे का रास्ता भी तो बताओ कि आगे कैसे वो प्रोडक्ट और सर्विस तक पहुंच सकता है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल द प्रोसेस, द स्टेजेस इन सोशल मीडिया मार्केटिंग। प्लेटफॉर्म सिलेक्ट करो, कंटेंट सीरीज होनी चाहिए, कनेक्ट होना चाहिए। और मैं आगे बताऊंगा आपको कुछ ब्रांड्स के केस स्टडी में आपको जल्दी से बताने वाला हूं, सिंस वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। मेक कंटेंट, post the content, promote the content, platform content, optimize your profile, make content, post content and promote the content. So content create करने के लिए आप ये सारे tools use कर सकते हो, Buffer, BuzzSumo, Canva, Sprout Social, Hootsuite, Feedly, Tweepy, Crowdfire, Bitly, Audience. जस्ट आपको जब भी टाइम मिले आज इन वेबसाइट गूगल में सर्च करिएगा और इनके बारे में थोड़ा पढ़िएगा कि बफर क्या है, बससुमो क्या है, कैनवा में आप वीडियो बना सकते हो, आप पोस्ट बना सकते हैं, आपको उस तरह के टूल्स, यूजर फ्रेंडली टूल्स हैं
कि एनीबडी जिसको ज्यादा टेक्निकल होने की भी जरूरत नहीं है, एंड यू कैन कम आउट विद अपीलिंग कंटेंट, राइट। एंड आपको इससे काफी बेनिफिट हो सकता है। बफर, बर्डसुमो, कैनवा, स्प्राउट सोशल, होotsuite। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये कुछ फेमस सोशल मीडिया कैंपेन्स हैं। अब ये फेसबुक पे कैंपेन चलाया था साउथ इंडिया शेल्टर होम्स में। साउथ इंडिया शेल्टर होम्स इज अ रियल एस्टेट कंपनी जो बेसिकली घर बनाते हैं चेन्नई में। अब इन्होंने एक कैंपेन चला दिया न्यू जनरेशन को कनेक्ट करने के लिए विद द ओल्ड जनरेशन। तथापा। नाउ तथा मीन्स ग्रैंड पेरेंट्स इन साउथ इंडिया। तो आप देख सकते हो इन्होंने जिस तरह के सीरीज पोस्ट किए। फर्स्ट पोस्ट, तथा प्लेड ऑल द टाइम विद मी। तो दादा पोते में या दादा पोती में होता है ना, हमारे घरों में भी हमने देखा होगा, दादा दादी को पोते पोतियों से बहुत लगाव होता है। तो आप देखो पहली फोटो में वो उनकी पीठ पर बैठकर खेल रहा है। तथा गेव मी सरप्राइज गिफ्ट्स। तो दादा दादी सरप्राइज गिफ्ट्स भी देते हैं पोते पोतियों को, तो उस पर से एक क्रिएटिव बना दिया। देयर अनकंडीशनल लव इज ऑलवेज देयर, उस पर से एक क्रिएटिव बनाया। तो इससे क्या होता है, दे आर एंगेजिंग ऑल कैटेगरी ऑफ ऑडियंस, द यंगस्टर्स, द मिड एज एंड द ओल्डर जनरेशन इन देयर कैंपेन। वो एंगेज करने में लगे। और ये कंटेंट ऐसा है कि इमोशनल है। अभी मैंने बताया था ना, कंटेंट दो तरह का होता है, एक होता है कोर कंटेंट और एक होता है एंगेजिंग कंटेंट। कोर कंटेंट में वो अपनी देखो ब्रांड का लोगो वगैरह सब कुछ लगा दिया उन्होंने, और फेसबुक पे जब पोस्ट किया होगा तो अपने पेज पे पोस्ट किया, अपना एड्रेस, नया साइट कहाँ पे बना रहे हैं वो सब कुछ दिया होगा। बट इन ऑर्डर टू एंगेज पीपल, इमोशंस आर समटाइम्स वेरी यूजफुल टूल। तो दादा दादी के इमोशन को यहाँ कनेक्ट किया, तो ये पूरे देश में कोई भी कोने में कैंपेन चलेगा, ये पसंद ही आने वाला है। समझ में आ रहा है आपको? सो साउथ इंडिया शेल्टर होम्स का ये कैंपेन है। ये दूसरा कैंपेन है अर्बन ट्री का। ये भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। इन्होंने अगेंस्ट चाइल्ड अब्यूज ये कैंपेन रन किया था ऑन फेसबुक, कि जब कोई लड़की छोटी है और उसके साथ अब्यूज होता है या उसका सेक्सुअल हरासमेंट होता है, तो अचानक उनके बिहेवियर में चेंजेस आते हैं। तो आप देख सकते हो फियरफुल बिहेवियर विद इंक्रीज्ड नाइटमेयर्स, सडन ड्रॉप इन सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक्सट्रीम अग्रेशन इवन ऑन ट्राइबल इश्यूज। ऐसा उन्होंने 5-6 पोस्ट किया सीरीज में, और and they were able to engage people on their platform. So thousands of people liked the post, and they actually got connected to the company's Facebook Urban Tree infrastructure, and that's how it has happened. Then Byju's Master G campaign, a Teachers Day tribute. तो ये वीडियो आप YouTube पे देख सकते हैं, बायजूस मास्टर जी कैंपेन, जिसमें बायजूस देखो अपने बिजनेस से भी कनेक्ट कर रहा है। टीचर्स डे पर ये वीडियो बायजूस ने रिलीज किया, YouTube पर भी है, कि किस तरह की प्रॉब्लम्स आई टीचर्स को जब कोविड में सडनली स्कूल्स और कॉलेजेस बंद हो गई। तो जो टीचर्स थोड़े ओल्ड एज के थे, उन्होंने ये नई टेक्नोलॉजी, जूम, गूगल मीट, ऑनलाइन टीचिंग को कैसे अडॉप्ट किया, और उन्होंने अडॉप्ट किया बिकॉज टीचिंग इज देयर पैशन। और इतना इमोशनल कंटेंट बायजूस ने बनाया, एंड इट अचीव्ड अ ग्रेट सक्सेस। तो देखो कोर कंटेंट तो है ही, मैं अपना प्रोडक्ट तो बता ही रहा हूँ, मेरी सर्विस तो मैं बेच ही रहा हूँ, मेरा ब्रांड नेम तो मैं विजिबल कर ही रहा हूँ, बट ब्रिंग इमोशंस इन द कंटेंट, देन इट विल एड वैल्यू। स्विगी वॉइस ऑफ हंगर, ये कैंपेन इंस्टाग्राम पे चलाया था स्विगी ने। इसमें क्या किया उन्होंने कि this social media marketing campaign incentivized the audience with what we say years worth of food vouchers on Swiggy. So all the participants, they had to do was to create a waveform resembling food shapes through voice notes on Instagram, which was a new feature in 2019 of Instagram. तो शुरुआती 12 घंटों में उन्होंने 10,000 एंट्रीज देखी,
And according to PG Aditya, Executive Creative Director at Dentsu Web Chutney. Dentsu Web Chutney is a digital advertising agency of a very well-known advertising agency, Dentsu. Influencers including Rohan Joshi and Srishti Bansal, along with comedians, musicians, and rappers, among others, participated in the campaign. So this social media campaign bagged 3 bronze lions. ये award मिला इस social media campaign को, Bronze Award at Cannes Film Festival, created by Dentsu Web Chutney. So Swiggy enjoyed a 40% rise in Instagram followers. So see what they are doing. They are engaging people that you send entries and create a waveform जो food shape से resemble हो और हमारे साथ share करो, and you see the result. Then the famous campaign of Tata Click. तो कोविड में हम सब लोग घर में थे, शॉपिंग के लिए नहीं जा सकते थे, लोग मिस कर रहे थे बाहर जाने को, तो टाटा केम आउट विद अ कैंपेन. सो उन्होंने क्या किया, द कंटिन्यूअस लॉकडाउन्स ड्यूरिंग द हाइट ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक, जब मॉल्स बंद हो गए थे, पीपल शॉपिंग को मिस कर रहे थे, लोग शॉपिंग को मिस कर रहे थे, तो इन दिस कैंपेन टाटा क्लिक सेड नो प्रॉब्लम एंड ब्रॉट द मॉल टू द इंडिया मार्केट. टाटा क्लिक ने 4 स्टोरी वर्चुअल मॉल बनाया अपनी इंस्टाग्राम फीड में, which contained the usual shops, food stalls, and gaming stores. And this brought the mall into the palm of the market. लोगों के हाथ में अब लोग मॉल को देख रहे हैं, वर्चुअल मॉल अपने इंस्टाग्राम फीड में. And not only was this, Tata Click also contacted influencers to become the host and guide for each floor. So 4 influencers partnered with the brand and helped the audience decide which shoes, clothes, or jewelry to buy. इतना ही नहीं, Tata Click dedicated the topmost floor to the cinema, theater, food court, and pub, complete with ambience and ASMR experience. So this campaign reached over 20 million people. It gained over 26 million impressions and received over 2.4 million engagements on Instagram. तो ऐसे टाइम में, तो मैंने बताया था ना कि पोस्ट जब करना है कंटेंट, टाइम पैटर्न मैटर्स. So why this campaign was successful? Because of its well thought out design, timeline, and execution. So a highly visual mall, refreshingly created, adapting to the online shopping during the pandemic, and the idea was perfect for the social situation during its launch. And it helped Tata Click to garner good, positive word of mouth. So hope this is clear, and let me stop sharing this. तो हमने शुरुआत की थी तब 40 पार्टिसिपेंट्स थे, 10 लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो गया जैसे जैसे हम एंड में आए. बट व्हाट लेसन यू डिराइव आउट ऑफ इट, याद रखिएगा, व्हाटएवर कंटेंट यू प्रिपेयर, ट्राई टू एम्बेड इमोशंस विद इन द कंटेंट, राइट. टाइमिंग का बहुत ध्यान रखना पड़ता है व्हेन इट कम्स टू रनिंग अ कैंपेन ऑन सोशल मीडिया. तो आप लोग आज जब भी टाइम मिले 2 कैंपेन जरूर देखना. पहला कैंपेन सैमसंग एलईडी टीवी रिपेयर एडवर्टाइजमेंट, और दूसरा कैंपेन बायजूस ट्रिब्यूट टू टीचर्स ऑन टीचर्स डे, द मास्टर जी कैंपेन. एंड यू विल कम टू नो कि कोई चीज मैं जो टीवी पे नहीं कर सकता, बिकॉज टीवी पर मुझे कोई वीडियो चलाना है तो बहुत पैसा लगता है, 10, 20, 30 सेकंड से ज्यादा का एड में नहीं कर सकता, इट्स वेरी एक्सपेंसिव. बट यूट्यूब पे तो आई कैन क्रिएट अ 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट वीडियो. क्रिएट द वीडियो, but it must embed with the emotions. Time, pattern, engagement will add value to your content. With this, it's time to shut my mouth. So if anybody has any question, we can have 1 or 2 questions and can take it further. Any questions, ladies and gentlemen? So, Yeah, Jaya. sir, you told about different factors that we should be considering, like time for content posting.
So Okay. suppose if I have to start my brand, so from where I should start? Like what factor I should be considering at an initial point of view? So if you want to start your brand or you want to start your campaign on social media, starting a brand is a different thing, and starting the brand's campaign on social media is a different thing. Right. So say suppose if I want to start a brand of ice cream, what do you think? When is the right time to sell ice creams? Summer season. Yeah. Right, when the ice cream demand is at its peak. And probably if I am a brand of ice cream, the most appropriate time to have a campaign for ice cream is in the summer season. Those 3-4 months of summer season, March, April, May, and June, I will burn maximum cash behind advertisement and promotions. Right. So starting a brand, there are altogether different set of factors which I'll consider. But if I have a brand and I want to run the campaign, why you see maximum air conditioner advertisements in summer? Why you see the Hajmola ad after 8 p.m.? Why you see these toothpaste ads in the night? Timing matters, right? Why you see the ads of universities and B schools nowadays in starting from January to June, because this is the season of admissions, right? So you must understand कि मेरा product का टाइमिंग क्या है. हाँ, अगर मैं स्किन केयर बेच रहा हूँ, कॉस्मेटिक्स, तो राउंड द ईयर आई विल रन माई कैंपेन, राइट? तब मुझे क्या करना है, दूसरे किस चीज पर बात कर रहे हैं, मुझे उससे उसको कनेक्ट कर देना है. लेट मी गिव यू वन एग्जांपल. आपको पता है एक कुछ सालों पहले एक मी टू करके एक मूवमेंट हुआ था. मी टू सेक्सुअल हरासमेंट, फीमेल्स पोस्ट काफी कर रही थी. तब जिलेट ने एक एडवर्टीजमेंट बनाया था, द बेस्ट अ मैन कैन बी. वो कैंपेन उन्होंने यूट्यूब पर चलाया and that campaign garnered great number of views and likes. Right? देखो उन्होंने टाइम कैच किया ना. फीमेल्स सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेन कर रही है कंट्री में, जिलेट ने क्या किया, अ मैन मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज जिलेट इज अ ब्रांड ऑफ मेल्स एंड दे केम आउट विद द कैंपेन. वो टाइम देखो उनका कैसा है, उन्होंने वेव को पकड़ा. तो दुनिया में मुद्दे आते ही रहते हैं, राइट? आपको कनेक्ट करना आना चाहिए अपनी ब्रांड को उसके साथ, एंड देन यू विल सी द रिजल्ट्स. राइट जया? Yes, sir. Understood. Thank you, sir. Any other question? Prashant sir, I would also request you to brief our students a little bit about how they need to shape up their profile, because you have given some inputs related to that during the session about the timings, and they need to post things which are currently happening, but still any input in terms of how companies would be very much interested in hiring them just looking at their profile, because nowadays they are always asking for their LinkedIn link. Exactly. Their page, and that is how they draw the entire picture of the candidate. So exactly. Any So tips if you can? Yeah, ma'am. So dear student managers, first of all, you must be proud of that you are getting a chance to be a part of such a prestigious university of the country. आप जिस इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो, सबसे पहले आपको उस पर गर्व होना ही चाहिए, क्योंकि आपने वहां से पढ़ाई कर ली है. The kind of activities shaping up in your institute, try and post those things on social media, on your LinkedIn account, on your Facebook account, and write content about this. This writing thing will help you develop and enrich your vocabulary, and it will also help you to become more fluent in English whenever you will face the interviewers. एक चीज है. दूसरा,
आप किसी सोशल कॉज के साथ जुड़े हो? क्या आपने कोई एनजीओ के साथ कभी काम किया है? क्या कभी आपने किसी विलेज में जाकर वहां की लाइफस्टाइल को एक्सप्लोर किया है? क्या आपने कभी कोई ऐसे ही रैंडमली एक पिक लेकर उसके बारे में अच्छा कंटेंट लिखा है, कनेक्टिंग इट विद योर एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन? दैट कैन बी मार्केटिंग, इट कैन बी एंटरप्रेन्योरशिप, इट कैन बी कम्युनिकेशन, इट कैन बी इंटरनेशनल बिजनेस. Because the moment you say कि near future we are going to face recruiters and they are asking for LinkedIn profile, it starts with your profile optimization. First of all, have a very professional, good-looking picture as your LinkedIn profile pic. Number two, the kind of content you are posting on LinkedIn, your connection with some NGO, any kind of social work you have done, and the kind of activities and initiatives you have done in your institution, क्या आप उनके बारे में लिख रहे हैं? Or you can have 2 or 3 random topics on marketing, the new and emerging areas in marketing discipline. Write some blogs on LinkedIn. LinkedIn also allows you to write an article. Write those articles, publicize those things. The moment you will post intelligent content on LinkedIn, like-minded people will approach you, they will send you connection request, and people will start to take you seriously. And every day, visit LinkedIn, like the post of others, जो आपको पसंद आता है, give comment, engage audience, and you will see आपका LinkedIn profile enrich होता जाएगा. So if you have any certificates, उनके बारे में post करो, एक अच्छा write up लिखो, हैशटैग हर पोस्ट के नीचे रखो, हैशटैग एमिटी यूनिवर्सिटी जयपुर, हैशटैग मार्केटिंग, हैशटैग HR, हैशटैग इंडस्ट्री. ये कुछ हैशटैग्स तो आप हर एक पोस्ट में डालो. एमिटी यूनिवर्सिटी जयपुर हैशटैग, हैशटैग HR, हैशटैग कॉर्पोरेट. इससे क्या है, ये लोगों तक पहुंचेगा. हैशटैग बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है हम लोगों के लिए. तो इन चीजों का आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए. फोटो से लेकर आप क्या लिख रहे हो अपने बारे में, इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ. तो रिक्रूटर के सामने जितना जैसे आप खुद को इंट्रोड्यूस करना चाहते हो, सेम वो शब्दों में आप उसमें भी लिखो अपने बारे में, इन अ वेरी आर्टिकुलेटेड मैनर. तब जाके एक आपका प्रोफाइल बिल्ड होता है. एंड सी, बिल्डिंग द प्रोफाइल इज नॉट अ वन डे टास्क. मैं पिछले 6-7 सालों से लिंक्डइन यूज कर रहा हूँ, एंड एवरी डे आई गो टू लिंक्डइन, आई मेक श्योर कि मैं कुछ नया कनेक्शन बनाऊं. लोग मुझे कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजते हैं और मैं किसी का कनेक्शन एक्सेप्ट करने के बाद उसको मैसेज भी करता हूँ, नाइस टू कनेक्ट विथ यू, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर कोलैबोरेशन इन फ्यूचर. क्या आप लोग ऐसा कर रहे हो? नहीं कर रहे हो तो करना शुरू करो, थोड़ा टाइम स्पेंड करो. लोग बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट करते हैं, अच्छे आर्टिकल्स उस पे होते हैं. न्यूज साइट्स को फॉलो करना शुरू करो, अच्छी यूनिवर्सिटीज, फॉरेन यूनिवर्सिटीज को फॉलो करो. तो आप देखोगे आपके पास कंटेंट आ रहा है, रेलेवेंट एंड कंटेम्पररी कंटेंट, एंड यू विल सी अ प्रोफाइल इज शेपिंग अप. यस मैम. I think we had Amit also coming up with some question. Amit, do you want to ask a question from sir? Yeah, Amit Kumar. I want to ask how we. Yes, madam. Sir, I was asking how we can earn more certificate in How you social can media. earn more certificate. See, earning more certificate, there are many free courses available on Google. Google Garage, there is a 40-hour digital marketing course available free, which you can complete at your own speed. Every day you give 1.5 hour, you complete the exercise, complete the quiz, and you get the certificate. One. And there are many platforms, those who can provide you certificate once you go through their curriculum just by paying some nominal fees. You have to spend money. ज्ञान लेने के लिए थोड़ा सा दान करना पड़ता है सरस्वती का, but that is not an issue. When you are regularly posting these certificates or any awards or medals, कई लोग तो क्या करते हैं, आज से 5 साल पहले उनको कोई सर्टिफिकेट मिला, अवार्ड मिला, वो लोग आज पोस्ट करते हैं उसको. 5 years ago, it was a wonderful day of my life.
when I got so and so. So I was recognized by so and so institution. It was a happening moment for me. क्यों ऐसा कर रहे हैं वो? बस क्रिएट करने के लिए, क्योंकि 5 साल पहले लिंक्डइन पे मैं नहीं था, लेकिन आज लिंक्डइन पे हूं। आज पता चलना चाहिए मेरे नेटवर्क को कि मैं किस तरह के अचीवमेंट्स मेरे हैं। तो मैं मुद्दा वही है कि मैं कैसे कनेक्ट करता हूं। अगर कोई पुरानी चीज भी मैं रख रहा हूं तो कंटेंट जो मेरा होना चाहिए वो रिफ्रेशिंग होना चाहिए, नॉस्टैल्जिक होना चाहिए, एंगेजिंग होना चाहिए, राइट? ओके, Thank you, sir. Any more questions, anybody? Okay, I think that was really enriching for all of them, sir, and they thoroughly enjoyed it. And the most important part is that I would be ensuring that they are following things now and they are taming themselves according to the norms of social media handles and improving upon their profiles as well. And I'm sure they will be benefited out of the internships and placements also if they go for this kind of a very planned setup and posting things accordingly the way they want their image to be shaped up. Yeah, that will be great. And I suggest you all read a book, Unsocial Network by Dilip Mandal. हिंदी में बुक है, इंग्लिश में नहीं है, हिंदी में है। हिंदी पढ़ते हैं ना आप लोग? कोई इशू तो नहीं है? ओके, तो अनसोशल नेटवर्क बाय दिलीप मंडल, किंडल पे भी मिल जाएगा, बट आप फिजिकल कॉपी खरीद के पढ़ें तो वो भी अच्छा है। अनसोशल नेटवर्क बाय दिलीप मंडल। तो मैंने जो कहा सेशन में, तो हम लोगों ने क्या किया है? तारीफ की है। जब आप ये बुक पढ़ोगे तो थोड़ा सा क्रिटिकल व्यू भी जानने को मिलेगा सोशल मीडिया के बारे में, कि हम कितने, अगर मैं बहुत सीधी भाषा में कहूं तो बेवकूफ हैं, ये भी पता चल जाएगा जब सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं हम। तो दोनों व्यूज हमें पता होने चाहिए ना, सोशल मीडिया की अच्छाई और सोशल मीडिया की नॉट सो अच्छाई, आपको दोनों पता चल जाएगा। छोटा सा बुक है, आप पढ़ लेंगे तो बहुत है। सोशल मीडिया के बारे में आप अपनी एक राय रखने लगेंगे फिर। ओके, अनसोशल नेटवर्क बाय दिलीप मंडल। या मैम, थैंक यू मैम। I think Kajal is also about to. Kajal, do you want to contribute something? Actually, ma'am, sir was going to repeat the story he told in the starting of the session. So he was like, when he finished the workshop, he will share the story. So I just wanted to add on that. Achha, that story which I started initially. Yes, sir. Yes. This is not justified. ये story के पीछे तो all kids are fan for stories. So the story is, जो मैंने शुरू में शेयर की थी वही सुनाऊं या दूसरी सुनाऊं? Same one, sir. Same one. Same one, sir. Same one. So once upon a time, there was a she camel, and she has a baby camel. The baby camel asked a question to his mother, "Mama, why we have such a large hump on our back? The peacock doesn't have, the lion doesn't have." The mother replied, "Beta, we live in desert area, and in desert area, we may not get water to drink for many days. This large hump helps us and keeps us dehydrated." Okay, good question, good answer. Question number 2 by the baby camel. "Mama, why we have such large spongy legs?" Mother replied, "Beta, we live in desert area, and in desert area we have to walk on hot sand. These spongy legs help us to walk effectively." Okay, good question, good answer. But child curiosity, question number 3. "Mama, why we have such large eyelashes?" Mother replied, "Beta, we live in desert area, and in desert area, sometimes there can be sandstorm. So these large eyelashes protect our eyes from the sand." The baby said, "Mama, we have hump for desert area. We have spongy legs for desert area. We have eyelashes for desert area. Then what we are doing in zoo?" And story khatam.
The moral of the story is, which is applicable to our session on social media marketing, anything at the right time, at the right place will give fruitful results. Anything at the wrong place, at the wrong time, create disaster. Any right thing at the wrong place is only a showpiece, nothing else. Okay, so with this, it's time to sign out from my side. Right, Kajal? Hope this time you heard the story. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Dipali ma'am. Yes, sir. It was a pleasure. Thank you so much, sir. It was a great learning for all our students, and we look forward to have more of such interactive sessions coming from you for different matches as well. Would be my pleasure. Thank you, ma'am. Thank you so much. Okay, so all of Okay. you, log off. You all can connect to me on LinkedIn. I am active on LinkedIn. Okay, bye-bye. Thank you. Do that. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you, sir. You all can leave now. Thank you, ma'am. Welcome. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you, madam.